So today, guys, we are going to cover the possessive adjective. जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट इन फ्यूचर मैं अगर कोई भी न्यू वीडियो जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश के रिगार्डिंग डालूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियो soon as possible. As you can see, it's a chart in front of you, which gives you very good clarification about how to use my with the different genders, means masculine, feminine, and plural. So today we will discuss कि हम masculine, feminine और plural को कैसे यूज करके कोई सेंटेंस बना सकते हैं. Let's say sentences are such like, for example, he is my father. So when it comes to my, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कई बार कि हाँ जी माई में हम मो यूज करें, माँ यूज करें या मे. सो इट विल डिपेंड अपॉन जेंडर. एज we can see that if sentence is he is my father, then father is a masculine gender. Yes, so that's why we will use more. If I will say she is my mother, then we will use feminine. This is ma. Mhm. If I wanna say okay, these are my dogs. Dogs are plural, like एक से ज्यादा है. अगर वो एक से ज्यादा है then we will use my के लिए हम ये particular word use करेंगे, which is may. It is pronounced as may. So right now अगर मैं कहना चाहूं कि he is your father, again he is your. So your is, we have two your, two which is informal you, and vous which is formal you. So according to conversation, if we are talking to friends, we will use to form. And अगर मैं कहना चाहता हूं कि he is your father, the father is masculine thing, then we will use ton. And if I want to say she is your mother, then I will use ta. Why? Your mother, mother is a feminine gender. And if I want to tell someone these are your dogs or these are your pens, for that particular your I will use they. If I'm talking to my friend, then I will use all these. And if I am talking to my boss, my teacher, my father, mother, or especially in case of if I'm talking to any stranger, then I will use this. So these are called possessive adjectives. Okay, so all these are possessive adjectives. So let's build some sentences. Before making sentences, I just want to clear on it. Like here, we write lu for masculine gender, and la is feminine, and for plural, we write lay. So I am going to explain you with wonderful examples. You guys, you just keep on listening this. आपको ये lecture बहुत ध्यान से सुनना है. So अच्छे से सुनना है so that कोई भी एक चीज मिस ना हो जाए. And ये topic आज आपका बहुत अच्छे से clear हो जाएगा. You will not ever forget this topic. Okay. So very first, I am going to write here. Let's say the dog, and article is lu xian, means the dog. If I want to say it is my dog, I will simply say, see, article is lu, which comes under masculine, and for that particular masculine I will use mon for my. Means okay, it is in French is written as say mon chien.
So it is very much clear that जो हमने possessive adjective यूज करना है, possessive adjective, इन सभी को possessive adjective बोलते हैं। अगर मैंने possessive adjective यूज करना है, then I will use possessive adjective according to my object or a noun जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। As here we have dog. So I'll give you another example here. Let's say I want to say the pen. Okay, the pen is lu silo. Okay, it is lu silo. So if I want to say it is my pen, again lu silo, then I will use say mon silo. All right, so it was quite easy to use. So now one more time, I will take some different examples now. Here, let's say I want to say the car. The car is called la voiture. La voiture. Repeat after me the sound. La voiture. If I want to say it is your car. Okay. So article is la voiture. Yes. So I will write here say. Okay. So here यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। लेट्स से अगर मैं फॉर्मल कहना चाहता हूं आई विल यूज दिस वन, अगर मैं इनफॉर्मल में कहना चाहता हूं योर, देन आई विल यूज दिस वन। सो आई एम गोइंग टू यूज बोथ। फर्स्ट इनफॉर्मल से ता वॉइचर मींस इट्स योर कार। एंड अगर मैंने इसी सेंटेंस को फॉर्मल में कहना है आई विल सिंपली से votre voiture। ओके, सो जब हम इसको फॉर्मल में यूज करेंगे तो तब ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। व्हाई? क्योंकि फॉर्मल में अगर चाहे आर्टिकल लू है चाहे ला, इट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ। एंड यस, आवर के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना राइट हियर it is our car. Okay, so we can write here say notre voiture. And yes, there is only one formal structure, notre voiture. That's it. So I will take one more wonderful example for you. Okay, so you guys are going to write it on your own. I will help you to write it right after that. I will give you some time to write this. Here, she is your mother. So try to write this sentence. So L-A ta mère. Okay, it is informal. And for formal, L-A votre mère. Okay, clear? Clairement? Yeah. Yes, sir. Très bien. Attendez s'il vous plaît. I will write you one more sentence for you. Okay, so you guys are gonna convert it. She is his mother. L-A sa mère. Why I have written sa mère? क्योंकि mère का जो आर्टिकल है, mère is a female character, right? ला, so that's why his के लिए मैंने sa यूज किया। और आप एक और चीज देख सकते हो, his और her के लिए सेम वर्ड यूज होता है। फॉर मैस्कुलिन son,
for both his or her. Again, sa, feminine singular, same. Say is plural one. And it is very easy to use. बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ. एंड आई वुड रिकमेंड कि हर एक पर आप मिनिमम 10 सेंटेंसेस लिखकर देखें घर पर. ओके, सो सेकेंड सेंटेंस फॉर्मल में कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट एल ए. इफ आई वांट टू से शी इज एल ए. Wait, so if I want to say she is her mother, then I will write again same sentence L A sa mère. For his and her we have same sentence, she is her mother. As you guys can see, his और her के लिए हमारे पास same ही word है यहाँ पर. Okay, I will take the Lucian. Okay. It is her dog. Mansanj, please convert. Sir, please. Mansanj. It's a solution. Harish, how you will write this sentence? Say sa लेशिया. Say sa le Lucian. Okay. Lucian. देखो यार, वान्या आप कैसे लिखोगे इसको? Sir, same way. Sir, sorry, learn नहीं लगाना. Learn नहीं लगाना. से साशिया कहते ऐसे. ओके, मनसांज आपने बिल्कुल सही बनाया था. ठीक है, से Okay, sir. सौशिया, दिस इज द करेक्ट वन. क्यों? वाई? देखो, जो इसका आर्टिकल है दैट इज लू, एंड लू इज मैस्कुलिन, एंड मैस्कुलिन में तो सौ यूज होगा ना, चाहे हिज हो चाहे हर हो. ओ, मैंने उसका ध्यान ही नहीं दिया. हरीश, समझ आया? हाँ जी सर, आ गया. सौ जो यूज होगा वो शिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूज होगा. और जैसे आपने द बोला है, इसका मतलब तो ये हो गया इट इज हर द डॉग. ऐसे थोड़ी ना होगा द डॉग. इंग्लिश में Yes, भी sir. हम ऐसे नहीं बोलते इट्स हर डॉग. हम ऐसे नहीं बोलते इट्स हर द डॉग. मींस अगर एक पोजेसिव आर्टिकल यूज हो गया तो हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करेंगे. पोजेसिव अगर हमने यूज कर लिया है तो. ओके, पोजेसिव एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड. सो हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं, इंग्लिश में भी नहीं यूज करते तो हम यहां पर क्यों यूज करें? सो ये जो सेंटेंस है दैट इज रॉन्ग. ओके, सो करेक्ट सेंटेंस इज दिस वन. से सोशिया. एवरीवन, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. All right. So I will give you one more sentence to write, and please be careful with the article. I will write the article also. Okay. So now I'm going to start it. The cow. La wash. The cow. So sentence is going to be like, it is her cow. Harish, please convert it. Unmute yourself.
Harish? So can I tell? No, Harish. Yes, sir. It is her cow. How to say that? Se, sa, washing. Say, sa, wash. Okay, Mansanj, is it a correct sentence? Correct translation? So, So there is no art. Sorry, what you so said? it is wrong. सर इन्होंने ला नहीं लगाया. Yes. उन्होंने ला नहीं लगाया. ला तो नहीं लगेगा ना. मैंने लास्ट अभी सेंटेंस में क्या समझाया था? इट्स हर काउ एंड हर के लिए हमने जो ला लू. था उसका सा यूज कर लिया. वाई? क्योंकि ला है फेमिनिन. फेमिनिन के अकॉर्डिंग आ जाएगा सा. ठीक है जी. Okay, नाउ नाउ हम इंग्लिश में भी ऐसे नहीं बोलेंगे इट इज हर द काउ. ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे. इट इज हर काउ. Yes, sir. सो हर काउ के लिए हमने सा यूज कर लिया. और ये ला जो है ये एक रेफरेंस है कि हम ला को देख के इनमें से यूज कर पाए. सा लगेगा, से लगेगा या सौ. वान्या Okay. समझ नहीं आया अभी तक भी? नहीं अब आ गया सर. आप पूछ सकते हो कोई भी सेंटेंस. सो लास्ट बोलूंगा मैं. Is it right, sir? या दैट वाज करेक्ट. Thank you. The bus. Blue bus. Mhm. It is our bus. Vanya. Okay. Say notre bus. Okay. Mansanj, is it correct? Yes, sir. Next is the parrot. Okay. It is le parrot. Parrot. Okay. What's that? Pahat. Echote. Okay. It is parrot. Okay. Parrot. We don't pronounce T here. Parrot. Okay. So if I wanna say it is my parrot. Mansanj. Say. Say more So can I? Say me parrot. Semo, echote. Okay. Very nice. Say more. Pahat. Perroque. Perroque. Okay. Perroque. Pehook. Yep. Okay. Perfect. So that's it for the day, guys. Thank you so much for staying tuned with me. And I'll definitely record something more with you. I will send this video to you so that you guys can download it and watch it anytime.